Assalamu alaikum everyone, and thank you all for joining us. And today we are going to talk about Baynet. As Mohammed already told you about the fiber optic division of Baynet and the partnership between Netpack and Baynet, now we'll delve more into the active, passive, and other accessories produced by Baynet. And let's start. So, talking about the Baynet, it's one of our oldest partnerships that Baynet has been working with, and it was founded in back in 1997 in Taiwan, and now Baynet has manufacturing facility in Taiwan and China, and we have research facilities in different locations across the world. So, basic products that Baynet focuses on is the passive products, and recently in last couple of years we have focused and started new products like active products like POE switches, media converter, SFP, and other active products as well. Talking about our facility and production procedure, Baynet is dedicated to provide the excellence and evidence in every product that they produce. And we keep in mind that every product that we produce should be top notch, up to the mark, and always have a proper quality assurance check on that. Okay, so you can see some of the pictures from our factories. So, talking about Baynet and Netpack. So, Baynet and Netpack have been partners since like 2000s, and Baynet is exclusive distributor for Pakistan market is Netpack. And the key product we are going to discuss today are active products in which we have the POE switches, unmanaged switches, managed switches, and recently inducted industrial switches. And then we have the cabling solution where we have the Cat6 products, Cat6A products, and we have the product line which includes all the product accessories in these classes. And then we have the Baynet accessories and FTTH and GPON, EPON series. And other than that, we do have some optical fiber accessories like optical fusion splicers, ODF, and other power supply products as well. Okay. So talking about the active product and the Baynet switches. So in the Baynet switches, we have the four leading classes. We have managed switches, then we have unmanaged switches, and we have POE switches, and then we have industrial switches and SFP media converters. Talking about the POE switches, so these are some of the models that Baynet is marketing in Pakistan, and we have a 4-port POE switch, we have 8-port POE switch, and all of these switches we have two variants. इसमें दो वर्जन आते हैं, एक फास्ट ईथरनेट एंड देन देयर इज अनदर वन विद द गीगाबिट. और इसमें कुछ ऐसे स्विचेस भी हैं जो कि फास्ट ईथरनेट स्विचेस हैं बट उनकी अपलिंक पोर्ट गीगाबिट है. And then we have 16-port POE switches, and then we have the high-end 24-port POE switches and 16-port POE switches. पाकिस्तान में different brands के POE switches आते हैं. So what is different in the Baynet? So we focus on the most recent things that and the trends we have in our IT field, and the main trending thing these days is AI. So all of our switches have the AI inbuilt, and we can talk about a few features that our POE switches have. For example, the POE power supply priority. So all of the ports on our switches, like जितनी भी इस पे ports हैं, they have a certain priority attached to it. Like port 1 पे जो product या camera connected होगा, उसकी priority जो पोर्ट 2 पे प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा होगी, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ वाइस वर्सा. सो जस्ट इन केस जब आप कैमराज या कोई एक्सेस पॉइंट हमारे POE स्विचेस के साथ कनेक्ट करते हैं एंड द प्रोडक्ट इज कंज्यूमिंग अ लॉट मोर पावर देन इट शुड, तो हमारा Baynet का POE स्विच इसकी प्रायोरिटी स्कीम पे चला जाएगा, and it will start give the most power and most priority to the device connected on the first port, and then the second priority will be on to the second port. उसके अलावा एक और की फीचर जो हमारे POE स्विचेस में आता है वो है एक्सटेंड पोर्ट का.
डिफरेंट एप्लीकेशंस में हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे कैमरास की इंस्टॉलेशन होती है जो कि बहुत दूर होते हैं। तो हमारे बेनेट के पीओ स्विचेस की एप्लीकेशन आप अप टू 250 मीटर्स तक कर सकते हैं। बट इसमें एक इसका ड्रॉबैक स्टैंडर्ड होता है जो कि ये है कि जब आप इसको 250 मीटर एक्सटेंड मोड में लेके जाएंगे, द पोर्ट विल शिफ्ट टू 10 Mbps। एंड एक और अक्सर हमें इश्यूज आते हैं, लाइक आपका पीओई स्विच की पावर एक्सीड हो चुकी है एंड इट्स नॉट फुलफिलिंग द योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें डिफरेंट सिस्टम इंटीग्रेटर्स या इंस्टॉलर्स को पता नहीं लगता कि लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पीओई स्विच में मसला है या उसकी पावर फुल हो चुकी है, या क्या मसला है। तो बेनेट के पीओई स्विचेस में विजुअल पीओई अलार्म की लाइट होती है और इसकी लाइट हमें इंडिकेट करती है कि अभी जो हमारा पीओई स्विच है कितनी पावर परसेंटेज पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, दैट मींस द पीओ इज रनिंग वेल अंडर 90% ऑफ इट्स आउटपुट पावर। और अगर इसकी लाइट लैंप की ब्लिंक करेगी, दैट मींस इट्स राइट अप टू लाइक 90 to 95% ऑफ इट्स पावर बजट। एंड इफ द लाइट इज ऑलवेज ऑन, दैट मींस द स्विच इज कंज्यूमिंग 95% or more power currently. And if the power usage is 100%, then अगर इसका पावर बजट 100% को अचीव करता है तो the switch has built-in AI and it will go back. Okay, so then we have the industrial switches, and talking about the industrial switches that we have is इनमें एक मेन की फीचर इंडस्ट्रियल स्विच का ये है कि ये -40 डिग्री से अप टू 85 डिग्री तक आपको काम करता है और ये डिन रेल और ट्रिपल पावर को भी सपोर्ट करता है। जस्ट इन केस वन पावर सोर्स आपका चला जाए, सो इट विल शिफ्ट टू द सेकंड वन एंड देन इट कैन शिफ्ट टू द थर्ड वन एज वेल। ये कुछ की फीचर्स हैं पीओ स्विचेस के, इंडस्ट्रियल पीओ स्विचेस के। इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट पीओ स्विचेस आते हैं, and then we have our media converter. What is different between our media converter and other brand media converter is, first of them is that we have a proprietary mold for our product, और दूसरा इसके अंदर हम फुल PCBA को यूज करते हैं। डिफरेंट अदर ब्रांड्स के जो मीडिया कन्वर्टर्स आते हैं वो यूजुअली एक छोटे PCBA के साथ होते हैं, जिसका जब एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे स्विच जाता है तो आपका मीडिया कन्वर्टर जाता है तो उसको इशू होता है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फुल PCBA एंड आल्सो यूजिंग हाई क्वालिटी ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड CE and UL listed power supply for our switch. Then we have our SFP modules. So we have SFP module for all the network activities and also for the GPON and EPON application as well. So हमारे पास different SFP modules हैं जिसमें PX20, triple plus, C triple plus, C tetra plus जैसे modules शामिल हैं. And then we also have the modules for 10G applications as well. इसके अलावा इन चीज़ों से तो आप पहले ही वाकिफ होंगे, बेनेट की कैट 6 केबल और उसका पूरा सोल्यूशन नेटपैक के पास अवेलेबल है, जैसे कि इसमें नेटवर्क केबल्स, पैच कॉर्ड्स, फेस प्लेट्स। वी हैव 2 types of modular jacks, one is shielded and one is unshielded, and then we have modular jacks and patch panels. Continuing to the next product, which is Cat 6A and Cat 7 solution, we have Cat 6 and 7 cables, we have patch cord, face plates, and the latest modular jacks for the Cat 6A as well. Or last but not least, we'll talk about the fiber optic series that Baynet produce. इनमें हमारे पास हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन है, रैक माउंट ODF and wall mount ODF, फाइबर, पैच कॉर्ड्स और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा Baynet 4U से लेकर अप टू 42U तक नेटवर्क रैक्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें सर्वर रैक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रैक्स शामिल हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर इट। थैंक यू।